Good morning everyone. Welcome to your maths class. Students, in last class we have completed with the exercise 14.2 and in today's class we are going to start with the new exercise, that is exercise 14.3 from your maths textbook, and this exercise is based on the how to find a perimeter of a given figure. Means if the figure is given and if the length of all the sides of that figure is given, then we have to find the perimeter of that given figure. Before starting with the exercise, I would like to tell you about what is mean by perimeter. Perimeter कैसे किसे कहते हैं? तो perimeter is nothing but the sum of ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन फिगर. पेरीमीटर किसे कहते हैं? पेरीमीटर जो भी कोई फिगर दिया है, जो भी कोई शेप दिया है, ज्योमेट्रिकल शेप, उसके हर एक बाजू को अगर हम ऐड करते हैं आपस में, जितने भी बाजुएं हैं, जितने भी साइड्स है उस फिगर के अंदर, उन सब साइड्स को अगर हम एक साथ ऐड करते हैं तो वो जो एडिशन आती है, वो जो सम आती है, दैट इज़ नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ दैट गिवन फिगर. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय पेरीमीटर? द पेरीमीटर ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of line segments is the sum of the lengths of all the line segments. That means if the given figure is ट्रायंगल, अगर कोई फिगर जो दी है, शेप जो दिया है वो ट्रायंगल है, तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ट्रायंगल? ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, है ना. तो दैट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विल बी द सम ऑफ द 3 साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, find the perimeter of triangle ABC. So here is the triangle. The name of the triangle is triangle ABC. So length of side AB is 18 meter, length of side BC is 20 meter and length of side AC is 21 meter. इसको 3 साइड्स है ट्रायंगल को, और तीनों साइड्स की लेंथ कितनी कितनी है? AB की लेंथ है 18 मीटर, BC की लेंथ है 20 मीटर और AC की लेंथ है 21 मीटर. एंड व्हेन वी ऐड ऑल दिस साइड्स लेंथ टुगेदर, when we add all the lengths together, we get the perimeter of that triangle. Okay, so see over here the formula for the perimeter of a triangle. Perimeter of a triangle ABC is equal to AB plus BC plus AC. Okay, so AB, what is the length of AB? It is 18. What is the length of BC? It is 20. What is the length of AC? It is 21 मीटर. तो इन तीनों लेंथ्स को ऐड करो और तीनों का लेंथ यूनिट सेम ही है, मीटर मीटर मीटर. तभी हमने तीनों को एक साथ ऐड किया, ब्रैकेट के बाहर क्या मीटर यूनिट दिया. तो 18 + 20 + 21, आंसर इज 59 मीटर. इन दिस वे वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. ओके, if any quadrilateral is given, quadrilateral means the shape which has 4 sides, है ना. it is the simple closed curve which has 4 sides and 4 vertices. तो quadrilateral में कितने sides को ऐड करना पड़ेगा एक साथ, so that we can find the perimeter of the quadrilateral. To find the perimeter of the quadrilateral, we have to add together the length of all the sides. That means we have to add together the 4 sides. कितने sides को ऐड करना पड़ेगा? जो चारों sides है उसके, उनको ऐड करना पड़ेगा. So we will move on to the exercise now. Exercise 14.3, question number 1. Find the perimeters of the following figures. So from this question 1, I am going to solve the subpart A and subpart C. Okay, and remaining questions B, D, E, F, I want you to solve in your homework. Okay, so 14.3, question 1. Find the perimeter of the following figures. In that subpart A, it is the figure which has 4 sides. How many sides are there in this figure? 1, 2, 3, 4, and they have given the length of all the 4 sides. इस साइड की भी लेंथ पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है. The length of this side is 38 meter,
this side is 30 meter and length of this side is 40 meter and length of this side is 80 meter. Now to find the perimeter, what we have to do? We have to do the sum of all the lengths of all the line segments. We have to add together the lengths of all the line segments. Perimeter find out करने के लिए हमें जो इस फिगर में जितने भी साइड्स है उन सब की लेंथ्स को एक साथ क्या करना है? ऐड करना है. So perimeter is equal to 38 plus 30 plus 40 plus 80. ओके ये चारों साइड्स की लेंथ्स को ऐड कर लो एक साथ एंड द फाइनल आंसर विल बी 188 meters. ओके इन दिस वे एंड देन we will move on to the next question, subpart C of the question 1. We have to find perimeter of this given figure. Again हमें ये जो फिगर दिया है इसकी perimeter find out करनी है. Now this figure has how many sides? पहले देखो इसमें कितने sides है. 1 ये एक side हो गया, 2 3 4. It has 4 sides and the length of all the 4 sides are given or not? Yes, the length of all the 4 sides are given. इसकी भी length दी है, इसकी भी length दी है, इसकी भी length पता है, इसकी भी length पता है. Now to find the perimeter, what we have to do? We have to add together the lengths of all the sides. सारे sides की जो lengths है उनको क्या करना है? ऐड करना है. जो जितने भी sides है इस फिगर में उन सबको क्या करना है? उन सब की लंबाई यानी लेंथ को ऐड करना है. Isn't it easy to find the perimeter? Yes, it's very simple to find the perimeter of any given figure. We just have to add together the lengths of all the sides. So 10 centimeter plus 18 centimeter plus 26 centimeter plus 17 centimeter. ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, सब साइड्स को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर. सो 10 plus 18 plus 26 plus 17. द फाइनल आंसर आफ्टर द एडिशन विल बी 71 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर कितना बना इसका? 71 सेंटीमीटर. ओके नाउ we will move on to the next question. Question number 2. Find the perimeter of triangles whose sides are 16 centimeter. Find the perimeters of the triangle whose sides are, and in this question number 2 there are subpart A and B. यहाँ पे question number 2 में triangles के perimeters find करने हैं. जो shape है, जो figure है वो triangle है, पर इसमें फिर दो subparts है A और B. तो A एक अलग ट्रायंगल है और B वाले क्वेश्चन में भी अलग ट्रायंगल दिया है. दोनों के लेंथ्स अलग अलग है, साइड्स अलग अलग है. ठीक है. सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गोइंग टू सॉल्व द सब पार्ट A एंड आई वांट यू टू सॉल्व सब पार्ट B ऑन योर ओन. सो सी A, सब पार्ट A, in that triangle has the sides. First side is equal to 16 centimeter, second side is equal to 16 centimeter and third side is equal to 16 centimeter as well. That means this triangle has all the equal sides. That means it's an equilateral triangle. जो triangle के सारे sides equal length के होते हैं उस triangle को क्या बोलते हैं? Equilateral triangle. The triangle which has all the sides equal in length, that triangle is known as equilateral triangle. So for reference I have drawn the figure of that triangle and that triangle I have represented the length of that triangle. The length of first side is 16 centimeter, length of second side is 16 centimeter and length of third side is also equal to 16 centimeter. ये पहली बाजू है उसकी भी 16 centimeter लेंथ है, दूसरी वाले की भी 16 है और तीसरी वाले की भी 16 है. Now can we find the perimeter of this triangle? Yes, we can find the perimeter of this triangle because we know the length of all the sides. हमें सारे sides की क्या पता है? Length पता है. And to find the perimeter of the triangle, we have to add together the length of all the sides of the triangle. So perimeter of a triangle is equal to 16 plus 16 plus 16. And outside of the bracket you have to give the unit. Remember to give the unit. Okay, 16 plus 16 plus 16 and outside of the bracket give the unit, that is centimeter.
So after the addition, I got the answer which is equal to 48 centimeter. So perimeter of this triangle is 48 centimeter. In this way, in the similar way, you have to solve the question B. So here the length was 16 centimeter for all the sides. In this subpart B, the lengths are different. Okay, all the three sides are having different lengths, and you just have to add these three numbers together to find the perimeter of that triangle. Okay. Then we will move on to the question number 3. The length and the breadth of the rectangles are given below. Find the perimeter. Again, from the question number 3, I am going to solve the subpart A. It has two subparts, A and B. I am going to solve the subpart A. So here the figure which is given over here is the rectangle, and they have given us the length and breadth of the rectangle, and from the length and the breadth of the rectangle we have to find its perimeter. So subpart A, in that rectangle has length equal to 250 meter and breadth equal to 180 मीटर. लेंथ जो है वो है 250 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है, लंबाई 250 है और चौड़ाई 180 है. ठीक है, रेक्टेंगल का. So what is mean by rectangle? Rectangle is that quadrilateral which has opposite sides equal, which has equal opposite sides. Rectangle is that quadrilateral which has equal opposite sides, and rectangle has 4 sides, and in those 4 sides opposite sides are equal. That means rectangle को कितने sides होते हैं? 4 sides होते हैं, और 4 sides में से जो opposite 2 sides होते हैं वो क्या होते हैं? Equal होते हैं, same length के होते हैं. That means अगर ये एक rectangle है A B C D, तो इसमें का AB is equal to CD. AB की लेंथ किससे इक्वल होगी? CD से. और BC जो है ये वाली लेंथ, इसके अपोजिट कौन सी साइड आ रही है? इसके अपोजिट AD साइड आ रही है. तो BC इज इक्वल टू AD, यानी अपोजिट साइड ऑफ योर रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, एंड रेक्टेंगल हैज द 4 साइड्स. नाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, what we will do, that we'll see in this question. So here they have given us the length of the rectangle is 250 meter and breadth is equal to 180 meter. तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया पहले A B C D, and length means लंबाई. तो लंबाई कितनी है? 250. That means AB is equal to 250 meter, and opposite to the AB there is side CD. That means CD is also equal to 250 meter. अगर AB 250 है तो CD भी 250 ही होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं. और ब्रेड्थ कितना है इस रेक्टेंगल का? इसका ब्रेड्थ यानी चौड़ाई इज इक्वल टू 180 मीटर. That means BC is equal to 180 meter, and if BC is equal to 180 meter, that means AD is also equal to 180 meter, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स है. ये दोनों अपोजिट साइड्स है और यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइड्स है. Let ABCD represents the rectangle whose length AB equal to CD is equal to 250 meter and breadth BC is equal to AD is equal to 180 meter. ओके, तो ये जो रेक्टेंगल है उसके जो साइड्स है हमने उसमें से लेंथ मार्क कर लिए और ब्रेड्थ मार्क कर लिए. अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं. सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स. इसके हमें सारे साइड्स के लेंथ पता चल गए सारे साइड्स के लेंथ्स. यस, AB की भी 250 है, BC की 180 है, CD की 250 है और AD की 180 है. और ये कैसे पता चल गया? क्योंकि जो लेंथ्स है वो 250 मीटर्स के हैं और जो ब्रेड्थ है यानी जो चौड़ाई है वो 180 है. तो ये भी 180 बन गया, ये भी 180 बन गया, और जो लंबाई वाले थे
लेंथ वाली साइड्स वो सारी 250 मीटर्स की होगी. नाउ द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स. दैट मीन्स कितने साइड्स होते हैं रेक्टेंगल को? रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स. दैट मीन्स पेरीमीटर विल बी इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. चारों साइड्स की जो लेंथ है उनको क्या करना है? ऐड करना है. So 250 plus 180 plus 250 plus 180 and outside of the bracket give the unit. So unit of the length was meter. यहाँ पे क्या था unit? Meter. So 250 plus 180 plus 250 plus 180 outside of the bracket give unit meter and the final answer will be 860 meter. क्या आएगा आंसर? 860 meters. And instead of adding all the 4 sides lengths of all the 4 sides together, what we can do, the other formula to find the perimeter of the rectangle is, here we are adding the length of all the 4 sides together. हमने क्या किया? सारे जो चारों के चारों साइड्स है रेक्टेंगल के, उन चारों के चारों साइड्स की जो लेंथ दी है हमें, उनको क्या किया? ऐड किया. यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, पेरीमीटर of rectangle ABCD is equal to twice of length plus twice of breadth. Okay, twice of length प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ. मतलब लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करो. लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस जो ब्रेड्थ को द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ योर लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ योर ब्रेड्थ. मतलब लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की जो एडिशन आएगी that will be equal to perimeter of your rectangle. So here the length was 250, so 2 into 250 meter plus breadth was equal to 180, so 2 into 180 meter. So 2 into 250 will be equal to 500 meter plus 2 into 180 will be equal to 360 meter. 500 plus 360 कितना आता है आंसर? इट इज़ नथिंग बट द सेम 860 मीटर. ओके, आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो या ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स हैविंग साइड्स. It has 2 subparts. Again question number 4 has 2 subparts, subpart A and B, and from that I'm going to solve the subpart A and I want you to solve the subpart B on your own. Okay, so we have to find the perimeter of the given squares and their sides are given over here, lengths of their sides are given. So in subpart A, length of the side of the square is equal to 15 मीटर. स्क्वायर की साइड कितने हैं? 15 मीटर लंबाई की है. एंड डू यू नो व्हाट इज द स्क्वायर? yes, square is nothing but the quadrilateral. That means square has 4 sides and all the sides of square are of equal length. So square has the equal sides or length of all the sides of the square is equal. ये जो स्क्वायर होता है ये क्वाड्रिलेटरल होता है और उसमें जो साइड्स होते हैं सारे के सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं. सो दैट मीन्स स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स. क्वाड्रिलेटरल मतलब जिनमें 4 साइड्स होते हैं. सो स्क्वायर हैज़ दी 4 साइड्स एंड ऑल द 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ. तो यहाँ पे उन्होंने सब पार्ट ए में स्क्वायर जो है उसकी लेंथ दी थी. इट इज़ इक्वल टू 15 मीटर. दैट मीन्स इफ़ आई हैव रिप्रेजेंटेड वन स्क्वायर हुज नेम इज़ PQRS. ये जो एक स्क्वायर है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है PQRS. देखो इसके सारे साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. इसके जो सारे साइड्स है चारों के चारों साइड्स दोज आर ऑफ इक्वल लेंथ.
दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल होगी, क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, ये लेंथ है ये इसके इक्वल होगी, आर एस इज इक्वल टू पी एस। दैट मीन्स ये सारी की सारी लेंथ्स ये और ये एक समान होंगी। So let PQRS represent square whose sides PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP and that is equal to 15 मीटर। कितने लंबाई की साइड है उसकी? एक, उसकी हर एक साइड 15 मीटर लंबाई की है। So to find the perimeter of the square we will use the formula over here, that is 4 into side, 4 into side। perimeter of a square PQRS will be equal to 4 into side। देखो हम लोग 15 + 15 + 15 + 15 कर सकते हैं या डायरेक्टली हम 15 into 4 कर सकते हैं। अगर हम 15 को 4 बार ऐड करेंगे तो भी आंसर सेम आने वाला है, या हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो इन अ सिंपलर वे द फॉर्मूला फॉर द perimeter of a square will be equal to 4 into side। okay, so 4 into side, so what is the length of a side? It is 15 meters, so 4 into 15 meter, 15 4s are 60, so final answer is equal to 16 meter। in this way we have solved question till question number 4, and remaining questions, those are question from question number 5 onwards we are going to solve in next class, and till then thank you, have a nice day।